Statement of Jordan-Holder theorem. So, first part, every finite group having at least two elements have a composition series. So, this is my first part. And second part, if A and B, these are two composition series of a group G, then the composition series A and B are equivalent. It means they are equivalent. There is 1-1 correspondence between the factor group of A and the factor group of B. So this is the statement of Jordan-Holder theorem. So this is very important result for examination point of view. Now, to prove this result, so first part, every group of order 2, at least has two element, has a composition series. So I take G be a group of order n and n is greater than equal to 2 because by given it has at least two elements. Now right here we shall prove it with the help of mathematical induction. So we shall prove it with the help of mathematical induction. So first I take if n is equal to 2, then order of G is equal to 2. So what is 2? 2 is a prime number. And every group of prime order is a simple as well as cyclic as well as abelian. Now, from this, it implies first I am taking identity, second the bigger group is only G, this values. So this is the only composition series of G. Why? Prove it. Now since G is a group of prime order, so it means it is a simple. Now what is factor group? Here factor group only one, this E, so which is isomorphic to G. And what is G? G is a simple. So it means this factor group is simple. If this factor group is simple, then it implies it is the only composition series of G, so which prove our result. So this is my first part. Second part, assume the result is true for all group of order. Assume the result is true for all groups of order less than n. So we will prove for the order n. So that is given. We will prove for the order n. Now the given group has two possibilities. Either it is simple or it is not simple. So if it is a simple group, if G is simple, then it means it has no proper normal subgroup. If it has no proper normal subgroup, in that case, this by this is only composition series of G. Why? Because it is a simple and it has no proper normal subgroup. So only subgroup are identity and itself. So it is only this composition series of G,
and its factor group G is G by E. So this is a isomorphic to G. And what is G? G is simple. So that is why, because its factor group is a simple. Case number 2. So G is not a simple. So in the case 1, it is a simple. In the case 2, it is a not a simple. Now, if it is a not a simple, then it has proper normal subgroup, right? So if G is not simple, then it implies G has proper normal subgroup because it is not simple. If it has a proper normal subgroup, then it has maximal normal subgroup of G because G has a proper normal subgroup, and it implies there exists a finite proper normal subgroup of G, subgroup of group G. Why it is finite? So since order of G is finite, so it has proper normal subgroup, and that proper normal subgroup has finite order. If it has proper normal subgroup, it means there exists some maximal normal subgroup. So I take this M, which is not equal to G, be a maximal normal subgroup, maximal normal subgroup of group G. So this is a maximum normal subgroup of group G, this values. So since it is a maximal normal subgroup, then it implies M is not equal to G, right? Because it is a maximum normal subgroup. Also, it means order of M and order of G. Order of M is less than order of G because M is not equal to G. And order of G is equal to N. And we know that by induction hypothesis, our result is true for all group whose order is less than n, then it means M has the composition series. So by induction hypothesis, so right here, by induction hypothesis, M has composition series. M has composition series. Say that series is, this is identity, which is M0 less than M1 less than M2, so on, less than MS, so which is equal to M. So this is a composition series. So by composition series, it implies each factor group, which is bigger group is Mi plus 1 over Mi, each factor group where I is simple.
where I is running from 1 to so on s minus 1, that's 0 to s minus 1. So this is given by definition of composition series. Each factor group is a simple. So I write as equation number 1. Now construct a composition series for a G. So how we will construct? So consider a series which is identity m0 less than m1 so on ms, which is m. Now this m is maximal normal subgroup. If it is a maximum normal subgroup, so there is no subgroup between m and g, and also m is not equal to g, so m is proper subgroup of g. So I consider this series. Now up to this stage, each factor group is simple, and only remaining factor group to discuss is G by M. Now as we know that since M is maximal normal subgroup of group G, then it implies we know that G by M is a simple. It means each factor group of series 2 is simple. It means each factor group of 2 is simple. If each factor group of 2 is simple, then it means G has a composition series. If it has a composition series, it means the result is true for our order of G equal to n. So it is our first part which give us idea that every finite group of at least 2 elements must have a composition series. And second part indicate that if it has more than 2 series, then they are isomorphic, or they are equivalent. Now in the given part, this is 2 series, one is A and B. Suppose one series E, which is G0 less than G1 and so on less than Gk, this is equal to G. I write it as equation number 1, and second is E H0 H1 and so on less than HL, which is again equal to G. So I write it as equation number 2, B. So these are 2 composition series, of group G. Now what is my aim? My aim is to prove that there is 1-1 correspondence between the factor group of the series A and series B. Now again we will prove it by mathematical induction on n. So what is the order of G which is equal to n?
right? And what is n? N is greater than equal to 2. So here, right, we will prove it with the help of mathematical induction. So first n is taking 2. Then what it implies? It implies it is only composition series of group G. So it is only composition series of group G because its factor group is G and G is simple. It means the result is true for n equal to 2. Why? Because it is only composition series. So this series is equivalent to itself. Now assume result is true for all groups of order less than n. Assume the result is true for all group of order less than n. Now, there will be two cases. Case number 1. If its ith element, यानी कि gk minus 1 is equal to hl minus 1 are equal. And second is they are not equal. No, these are equal. If they are equal, then it means E, which is started from G0, G1, and this is up to Gk minus 1, 1 series, and E less than H0 less than H1 and less than HL minus 1, they are equal. If they are equal, then this is the same group as K minus 1. I write it as equation number 3 and equation number 4. I write it as equation number 3 and equation number 4. Now, these are two composition series of Gk minus 1. These are two composition series of group Gk minus 1 for this group. Now, if these are two composition series of this Gk minus 1, also we know that Gk minus 1 is less than G. It implies order of Gk minus 1 is less than order of G. So we can apply the induction hypothesis. So by induction hypothesis, 3 and 4 are isomorphic. By induction hypothesis, composition 3 and 4 are equivalent, and also we use the second name isomorphic. Either it is equivalent or isomorphic. Now, if they are equivalent, then first it satisfies two conditions. Condition number 1, L minus 1 will be equal to K minus 1. It implies L is equal to K. So it proves first result.
Second result, the factor group are isomorphic. Second is also each factor group are isomorphic, right? So remember that each factor group, there exists one correspondence between factor groups of composition series 3 and 4, so that they are isomorphic. पर अगर असी इक्वेशन नंबर ए ते बी नू देखिए तो साडा रिजल्ट k-1 ते l-1 तक ट्रू हो गया। तो सिर्फ लास्ट वाले ग्रुप रह गए, लास्ट वाला फैक्टर ग्रुप रह गया। सो लास्ट वाले फैक्टर ग्रुप केड़े आ, g बाय gk-1 और दूजा केड़ा g बाय hl-1। So also we know that I take gk by gk-1, this values. Now this is equal to, right, what is gk? So this is a g and this is gk-1, right? So what is g? G can be written as HL and gk-1 is equal to HL-1 because they are equal, because in the given part this condition is given, and this G also written as HL over HL-1, right? So this is a factor group of A series and this is a factor group of B series. Now they are isomorphic, number 1. Number 2, since it is a maximal normal subgroup of G, so this factor group is simple. Again, this is a maximal normal subgroup of G, so this is a factor group is simple. So it means series A and B are composition series, number 1, and number 2, all the factor group are isomorphic. So it implies there exists now one correspondence between, now I am talking about composition series of A and B. Composition series of A and B, not 3 and 4, A and B. So in the previous part, I discussed for 3 and 4. Now I am talking about A and B. There exists a 1 correspondence between the factor group of composition series of A and B, A and B composition series, so that composition series, so that their factor group are isomorphic.
isomorphic. So if their factor group are isomorphic, which prove our result. So this is a case 1 in which both the ith term gkl minus 1 and gk minus 1 are equal. Now case number 2, again we are applying induction. So what is case number 2? So in this case gk minus 1 and hl minus 1, they are not equal. So remember here, so this is difficult than that case. So this is not equal to this values. Now also we know that these are the maximal normal subgroup of G. So remember in our series, since gk minus 1 and hl minus 1 are maximal normal subgroup of group G. If it is a maximal normal subgroup of group G, then it means their factor group are simple. Number 1. Their factor group are simple. So remember that result. Also, I take a third group which is an intersection gk minus 1 intersection hl minus 1. So it is also normal subgroup of group G, as well as it is a part of subgroup of group G. So being a intersection, also Q is part of gk minus 1, part of gk minus 1, and Q is part of hl minus 1. Remember that. After that, now they will not be equal, because if they will be equal, then gk minus 1 and hl minus 1 will be equal, so which contradict our this condition. So also they are not equal. So I prove as, if suppose they are equal, suppose if Q is equal to gk minus 1, it implies hl minus 1 intersection gk minus 1 is equal to gk minus 1, which implies they are equal because they have same intersection. hl minus 1 is equal to gk minus 1. So which contradict this condition. So which is not possible. Why not possible? Because by the given condition. It means they are not equal. So Q is a subset of this but not equal. It means it is a proper subset. Again, it is a proper subset. If it is a proper subset, so what we get? Q is a part of gk minus 1 and Q is a proper subgroup of hl minus 1, right? So we get this values. Now from this we know that the order of Q is less than order of G. So in that case we can apply the hypothesis, induction hypothesis. So here the result is true for Q. So remember that. Now after that, if gk minus 1, this is gk minus 1, which is a normal subgroup, hl minus 1 normal subgroup,
So this product is normal subgroup of a group G, right? So this is a normal subgroup of group G. And this GK minus 1 is part of this. This is a part of this. And this is a part of G. Clear? It is again normal subgroup. Also here HL minus 1, which is part of same line of action, GK minus 1 into HL minus 1, and it is which is equal to G, right? It is a normal subgroup of G. Now first I discuss this part. Now what is this? It is a maximal normal subgroup of G. If it is maximal normal subgroup, then it has two possibility. Either it is equal to this set or this is equal to this set, because there will be no subgroup between them. If it is a maximal normal subgroup of G. But they cannot be equal because HLN and GK minus 1 are not equal. So this is basically proper subgroup. Proper. And again it is a proper. Why? Because they are not equal. Because if they are equal, HL minus 1, they cannot be equal because they are not equal set. Right? Now, from this, see that it is a maximal normal subgroup of G. So G can be written as GK minus 1 into HL minus 1. Remember that. Similarly, this is a maximal normal subgroup. So again G can be written as GK minus 1 into HL minus 1. So remember that. तो क्यू तो बाद अगला साढ़े को GK माइनस 1 आ गया. GK माइनस 1 तो अगला ग्रुप कौन सी? G सी. वो साढ़े को बन गया. सेम ही इस केस दे विच बन गया. राइट नाउ हुण आपां इस पार्ट नूं सिर्फ समझ के इनू इत्थे छड्ड दईए. इनू असीं समझ लिया कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और इनू असी इत्थे छड्डता. हुण आ जी इत्थे ऑर्डर ऑफ क्यू इज लैस दैन ऑर्डर ऑफ जी. ਇਹਦਾ मतलब कि साडे कोल क्यू दे लई रिजल्ट ट्रू है. क्यू दे रिजल्ट लई ट्रू का मतलब की है कि क्यू दे लई जिहड़ी भी कंपोजिशन सीरीज होणगियां वो इक्वलेंट होणगियां. जैसे उन्होंने कह सकते हैं कि इक्को ही कंपोजिशन सीरीज होएगी. मान लो उस कंपोजिशन सीरीज का नाम आइडेंटिटी विच इज इक्वल टू क्यू 0 विच इज लैस दैन क्यू 1 एंड सो ऑन अप टू असी क्यू एम तक चल जाइए. सो वट इज दिस? इट इज ए क्यू. सो वट इज दिस? इट इज ए बी only composition series for Q. Why? Because the result is true for Q. So I write its name as 4. Now I construct for G and G. I construct a composition series of G. So that is to prove that these composition series are equivalent. So this is first Q0 less than Q1 so on Qm. After Qm, which is a Q, so next is Gk minus 1 or Gk minus 1, these values, and after Gk minus 1 we have
gk. So gk is equal to g, this values. And second, in term of this e, which is Q0, so I construct two composition series for a G. So this is Qm, which is Q. After this, it will be HL minus 1. After this, it is a HL, and this is a G. So I write it as equation number 5 and equation number 6. Now to prove the result for a group G, I want to prove that the composition series 5 and 6 are equivalent. तो Q तक साडा रिजल्ट प्रूव आ, वो चार इक्वेशन के अकॉर्डिंग Q तक रिजल्ट साडा प्रूव आ। तो अगे साडे कोल दो फैक्टर ग्रुप रह गए, किहड़े किहड़े? एक फैक्टर ग्रुप और दूजा फैक्टर ग्रुप। इदां ही इधर एक फैक्टर ग्रुप और दूजा ए फैक्टर ग्रुप। और ए फैक्टर ग्रुप किद्दां दे होने चाहिए? पहली गल, ए फैक्टर ग्रुप सिंपल होने चाहिए और दूजा एक दूजे नाल आइसोमॉर्फिक होने चाहिए। ठीक है जी। सो सिंपल रिक्वायरमेंट किहदी है? कंपोजिशन सीरीज दी, और आइसोमॉर्फिक 1-1 कॉरस्पोंडेंस दी रिक्वायरमेंट आ। और तीजा आ के ते एल आपस दे विच बराबर होने चाहिए। ये बराबर हो गए क्योंकि एम तो बाद एक कितना आ गया? m+1, फिर आ गया m+2। तो k की वैल्यू कितनी होगी? m+2। और सिमिलरली हेयर l की वैल्यू भी कितनी होगी? m+2। तो k तो l आपस दे विच बराबर हो गए। हुण आपां अगली गल करिए। तो अगली गल सब तो पहला समझ लो, HL-1 साडे कोल की सी? मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया? G बाय HL-1 साडे कोल किदां दा होएगा? सिंपल हो जाएगा, राइट। अगेन GK-1 ये होया मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। ਇਹਦਾ मतलब G बाय GK-1 भी साडे कोल सिंपल हो गया। माइंड च याद रखना, ठीक है जी। हुण हजे दो ग्रुप सिंपल प्रूव करने रहंदे आ, वो भी कर लेने। नाउ फ्रॉम दिस there are two factor group. One is GK-1 by Q and second is GK by GK-1। सो साडे कोल दो फैक्टर ग्रुप रह गए। तो पहला फैक्टर ग्रुप मैं ले लिया GK-1 बटा Q। बड़े ध्यान नाल दिस वैल्यूज। सो GK-1 Q की वैल्यू की सी? GK-1 इंटरसैक्शन HL-1, राइट। सानू पता ये उहदी वैल्यू सी। और बाय थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिक, दिस इज आइसोमॉर्फिक टू देयर प्रोडक्ट GK-1 HL-1 ओवर HL-1। याद है किहड़ी थ्योरम अप्लाई की? असी आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स पढ़ियां सी। उहदे विचों जिहड़ी साडे कोल आइसोमॉर्फिक थ्योरम सीगी वो असी इहदे ते अप्लाई की। सो बाय आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, सो व्हाट वी दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस वैल्यूज। अगर ये आइसोमॉर्फिक हो गया, इट इंप्लाइज दिस प्रोडक्ट हुणे असीं प्रूव करके हटे सी किहदे बराबर आ? जी दे बराबर। और साडे कोल ये आ गया HL-1। ਇਹਦਾ मतलब आ असी हुणे प्रूव किया कि ये साडे कोल सिंपल आ
जे ए सिंपल आ तो आ ग्रुप भी सिंपल हो गया। दिस ग्रुप इज अगेन सिंपल। क्लियर? तो असी सिंपल वाली प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। हुण असी दूजे पासे चलीए। दूजे पासे मतलब एच एल माइनस वन ओवर क्यू। नाउ व्हाट इज दिस? ऑन सेम लाइन ऑफ एक्शन एच एल माइनस वन नीचे वैल्यू पुट कर दिए, जी के माइनस वन इंटरसेक्शन एच एल माइनस वन, अप्लाई द आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, it will be g k minus वन एच एल माइनस वन। और नीचे क्या आ जाएगा? जी के माइनस वन आ जाएगा। यदि वैल्यू किहदे बराबर प्रूव की सी? जी दे। और नीचे आ गया साढ़े को एच के माइनस जी के माइनस वन। नाउ व्हाट इज दिस? दिस ग्रुप इज ए सिंपल, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप सी, तो दिस ग्रुप इज ए सिंपल। तो साढ़े को आ ग्रुप भी सिंपल हो गया। क्लियर? सो दोनों चारों ग्रुप सिंपल हो गए फैक्टर ग्रुप, और चारा फैक्टर ग्रुप च आ इहदे आइसोमॉर्फिक हो गया और आ इहदे आइसोमॉर्फिक हो गया। सो इसदा मतलब जिहड़े रिमेनिंग 2 5 ते 6 सीरीज़ दे फैक्टर ग्रुप सी वो आइसोमॉर्फिक भी हो गए। जे आइसोमॉर्फिक भी हो गई तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ इक्वेशन 5 एंड 6 है कंपोजिशन सीरीज़, वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆइसोमॉर्फिक हो गईयां। आइसोमॉर्फिक हो गईयां। सो विच प्रूव आवर रिजल्ट? सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड ए जॉर्डन होल्डर थ्योरम। और जॉर्डन होल्डर थ्योरम च असी इत्थे किहड़ी थ्योरम लाई आ? इत्थे लाई सैकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। सो बाय सैकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। तो अगर किसी नूं भुल गया तो दी स्टेटमेंट नूं देख लो, आइसोमॉर्फिज्म। सो बाय सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म this is isomorphic to this, which prove our result. Now after that ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਲਿਆ, तो ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜॉर्डन होल्डर थ्योरम्स। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ S3 ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ, S4 ਦੀ ਵੀ ਲੱਭੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਨ 4 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਔਰ ਕੁਆਟਰਨੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਰਟ ਬਣ ਕੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਨ 4 ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਕਲੀਨ 4 ਗਰੁੱਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? V4 ਹੁੰਦਾ, S4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ 1 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਬਚਿਆ 3 4 ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ 1 3, ਜੋ ਬਚਿਆ 2 4, फिर आ गया 1 4, जो बचा 2 3। आ साढ़े को क्लीन 4 सब ग्रुप हो गया, क्लीन्स 4 ग्रुप। और ये सब ग्रुप किदा? S4 का। और यदी कंपोजिशन सीरीज़ एग्जाम दे विच पूछी गई है GNDU 2000 दे विच ते 2001 च, इस तो बाद भी पूछी गई है। सो लेटेस्ट जिहड़ा है वो तुसी 10 ईयर तो चैक कर सकते हैं। सो साडे कोल असी V4 दी कंपोजिशन सीरीज़ नूं करना। V4 नूं असी इस ढंग नाल भी लिख सकते हैं,
ए बी दे विच। सो जी अगर साडे कोल ग्रुप है, सो दिस इज़ ए वन इज़ आइडेंटिटी, एक एलीमेंट ए, एक एलीमेंट बी और तीजा एलीमेंट हो जाता ए बी। आ साडे कोल इस फॉर्म दे विच असी लिख सकते हैं। सो दिस इज़ आल्सो नेम्ड एज क्लीन फोर ग्रुप, क्लीन फोर ग्रुप। सो किसी भी ढंग दे नाल असी इनू कर सकते हैं और इहदा एलीमेंट ए बी का नाम सी भी रख सकते हैं। सो ये साडे ते डिपेंड करता, तीन एलीमेंट हो गए ए बी ते सी, इत्थे भी तीन एलीमेंट हो गए, इट इज़ ए, इट इज़ बी एंड इट इज़ सी। सो इन्हां दोनों का प्रोडक्ट करांगे तो साडे कोल तीजा एलीमेंट आ जाएगा। नाउ असी सीरीज़ दी फाइंड की करना, असी इहदी जिहड़ी है कंपोजिशन सीरीज़ बनानी। तो एक तो मैं सब ग्रुप लै लेना इहदा, जिहदे विच एलीमेंट लै लेना, हेयर इट इज़ आइडेंटिटी, एक लै लिया आइडेंटिटी, एक लै लिया ए। ठीक है जी, आ लै लिया पहला। सो ये सब ग्रुप आ। हुण सीरीज़ साडे कोल आ गई, फस्ट आइडेंटिटी लैस दैन ए, ये दो एलीमेंट आ, लैस दैन जी, ये साडे कोल चार एलीमेंट हो गए। ठीक है जी। तो पहला तो नॉर्मल होने चाहिए, नॉर्मल है, और क्योंकि जिहड़ा साडे कोल क्लीन फोर आ, इहदा ऑर्डर कितना चार आ, जे इहदा ऑर्डर चार आ पी स्केयर तो अबेलियन हुंदा, अबेलियन च हरेक सब ग्रुप नॉर्मल हुंदा, तो सब नॉर्मल सीरीज़ तो है ही है। हुण इहदे असीं फैक्टर ग्रुप देखिए, एक फैक्टर ग्रुप आ गया ए बाय आई, दूजा आया जी बाय ए। ठीक है जी। हुण इन्हां दे ऑर्डर देखिए, इहदा ऑर्डर कितना आया दो, और इहदा ऑर्डर भी दो ही आया। सो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज सिंपल। तो ये साडे कोल सिंपल हो गए। जे सिंपल हो गए तो यदा मतलब आ साडे कोल की बन गई, कंपोजिशन सीरीज़ बन गई। सो दिस इज ए कंपोजिशन सीरीज ऑफ क्लीन फोर सब। सो दीज आर सम सिंपल क्वेश्चन, पर अटैम्प्ट करन च थोड़ी जी प्रॉब्लम जरूर हुंदी है। सो इस करके इन्हों बड़े ध्यान दे नाल 2-4 नंबर दे विच ये पुछ ले जाते हैं। ठीक है जी। सो इनू असी उस ढंग दे नाल कर लेना। उस तो बाद असी साडे कोल है जिहड़ा पार्ट है कि असी कंपोजिशन सीरीज़ फाइंड करनी है क्वाटरनियन ग्रुप दी। सो क्वाटरनियन ग्रुप इनू असी लिखते हैं Q8 दे नाल। सो दिस इज ए Q8, और ये एग्जाम दे विच GNDU 2016 दे विच 2017 च भी पूछा गया। सो एक पार्ट बना के इदां दे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कंपोजिशन सीरीज़ इहदी बना Q8। सो उहदे बारे सानू सब तो पहला तो ग्रुप बारे पता होना चाहिए। सो इनू Q8 का नाम रख लिया मैं जी, और ये सानू पता एलीमेंट किहड़े हुंदे, +-1 +-I +-J +-K, दिस हो गया। ठीक है जी। और ये नाल कंडीशन सानू पता कि I J = K एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशंस सानू पता है। तो असी ये सब ग्रुप बना लिए, ABC सब ग्रुप उस टाइप के असी तैयार कर लिए। नाउ ए नू अगर मैं कंसिडर कर लेना आई दे नाल, सो दिस इज +-1 तो आना ही आना, +-1 +-I ये आ गया। बी नू मैं जे दे नाल कंसिडर कर लेना, +-1 +-J, और सी नू कंसिडर कर लेना
k ना, +-1 ਤੇ +- ਸਾਡੇ ਕੋਲ k। ठीक है जी। तो एक ग्रुप +-1 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਲਈਏ D ਰੱਖ ਲਈਏ ਜਾਂ ABC ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਲੋ D ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਵਟ ਇਜ਼ D? ਇਹ ਸਮਾਲਰ ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ +1 ਤੇ -1 ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਆਰਡਰ 8 ਆ, 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਲਾ A ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, B ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, C ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੇਮ ਹੀ ਆ, G A B C ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ D ਵਾਲਾ, ਦਿਸ D ਐਂਡ D। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਦਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਦਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਦਿਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 3 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, G/A, A/D, ਤੀਜਾ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ D/I। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ G/A ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 2, ਔਰ 4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ 2, ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ 2 2 2 ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਆ, ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ G ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਤੁਸੀਂ G/A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ B ਆ ਗਿਆ, B/D ਆ ਗਿਆ, ਔਰ D/I ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ G/C ਲੈ ਲਓ, ਔਰ C/D ਆ ਗਿਆ, ਔਰ D/I ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਆਰਡਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, 2 2 ਤੇ 2, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਕਿਹਦੀ? ਕੁਆਟਰਨੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਗਰ एग्जाम च पूछा जाए कि फाइंड इट्स कंपोजिशन सीरीज एंड प्रूव दैट दे आर इक्वलेंट, सो दे आर इक्वलेंट, इन्होंने असी इक्वलेंट भी प्रूव कर सकते। जिदा 1 ते 2 ਨੂੰ कंसीडर कर लिया, सो दिस वैल्यू इज D/I, सो दिस इज आइसोमॉर्फिक टू दिस, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, तो साडे कोल आ जड़ियां साडे कोल है, इन्हां नूं असी आइसोमॉर्फिक इन्हां नूं चैक कर सकते हैं। एक इहदे नाल आइसोमॉर्फिक हो जाएगी और दूजी उहदे नाल आइसोमॉर्फिक हो जाएगी। सो इन्हां नूं आपां आइसोमॉर्फिक भी प्रूव कर सकते हैं। जस्ट substitute its value, then you will find they are isomorphic because of same order. So in this way we can find the composition series of quaternion group. Now next is octic group, OCTI. So this is octic group. ਇਹਦੀ composition series भी discuss कर लेंगे। So exam च आई ਤਾਂ नहीं है पर आ सकती। So octic group ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? D4. So octic group of order D4. So this is x square, फिर आ गया ਇਹਦੀ वैल्यूज x3, x4, सो जनरेटेड बाय साडे कोल x आ गया, एंड x4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इत्थे तक हो गया। उस तो बाद x स्क्वायर y, दिस वैल्यूज x y, दिस इज स्टार्ट फ्रॉम x y, x स्क्वायर y, फिर आ गया x cube y, and this is x cube y, and then y। 4 एलिमेंट्स साढ़े को आ गए।
और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ, ਔਰ ਦੂਜਾ y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਇਹ ਵੀ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ D4, ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ਇਹਦੀ ਸਬ ਨੋਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ D4 ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਲਵਾਂਗੇ EX x ਸਕੁਅਰ ਐਂਡ x ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਲਵਾਂਗੇ। x4 ਵਾਲਾ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਲਵਾਂਗੇ E ਤੇ x ਵਾਲਾ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ E ਤੇ x ਸਕੁਅਰ ਵਾਲਾ, ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਆਇਡੈਂਟਿਟੀ। ਇਹ ਬਚ ਜਾਏਗੀ ਇਹਦੀ ਸਬ ਨੋਰਮਲ ਸੀਰੀਜ਼। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਿਆ D4 ਬਾਏ ਦਿਸ, ਇਫ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ A, ਦਿਸ ਆਈ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼ B। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 2 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਸ਼ੈਂਟ ਗਰੁੱਪ D4 ਬਾਏ E, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ 2 ਆ ਗਿਆ। A ਬਟਾ B ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ। B ਬਟਾ E ਦਾ ਆਰਡਰ ਵੀ 2 ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ 2 2 2 ਹੈ। ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਸਿੰਪਲ, so it means it is a composition series. So in this way we can find the composition series of the our this set, right? So ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ composition series ਨੂੰ find ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now next is give an example of two non-isomorphic finite group which have isomorphic composition series. So this is again important result and try it yourself. So this is very important, so do it yourself. Give an example of two non-isomorphic finite group which is G and H. Suppose it is G and H, which has isomorphic composition series. ठीक है जी। सो ये स्टेटमेंट आ, ये आई थिंक GNDU 2018 ਜਾਂ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਇਆ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੋਨ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਇੱਕ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਅਬੈਲੀਅਨ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੈਟ G is equal to S3. So it is a non-abelian group is, ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, every group of order 6 is abelian or is cyclic or isomorphic to S3. तो ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ S3 ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼। So let G be a symmetry group of order, group of degree 3. So ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਰਡਰ ਆਫ G ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 6 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, H generated by A, which is a cyclic group of order 6। ठीक है जी।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਜੀ? every group of order 6 is either cyclic, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? S3। तो ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਟੂ S3 ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਬ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? G, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ। A3 ਆ ਗਈ, ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ S3 ਦੀ। S3 ਦੀ ਤੇ S4 ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ ਲੈ ਲਿਆ G ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਗਰੁੱਪ H, ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ, ਔਰ ਇਹ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय A है। अगला ले लिए जनरेटेड बाय A²। तो ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਫਾइंड ਕਰੀਦਾ? ਆਰਡਰ ਆਫ A² ਆਰਡਰ ਆਫ A ਬਟਾ GCD ਆਫ ਆਰਡਰ ਆਫ A ਤੇ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ? 6 ਥੱਲਿਓਂ 2, ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 3 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ? 6 ਹੈ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਅਬੈਲੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹੜਾ ਬਣਿਆ? ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਦਿਸ ਜਨਰੇਟਡ ਬਾय A, ਜਿਹਨੂੰ H ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟਾ A²। ਦੂਜਾ ਬਣਿਆ A² ਬਟਾ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 6 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 2, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ। ਐਵਰੀ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ every group of prime order is cyclic as well as simple। ਇੱਧਰ ਆ ਜੀ, ਸੋ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ G by A3, ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ? A3 by I, ਰਾਈਟ, ਦਿਸ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਹੁਣ G by A3 ਆ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? G by A3। G ਹੈ S3, A3 ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਏਗਾ 2, ਔਰ ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ A3 ਦਾ ਫਿਰ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ 3। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਦੋਨੋਂ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ give an example of two non-isomorphic group which have isomorphic composition factor। ਠੀਕ ਹੈ, तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਆਰਡਰ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਆ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਆਰ ਅਗੇਨ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ। ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਆਰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ। ਤੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G by A3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ G ਤੇ H ਆ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ H ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਬੈਲੀਅਨ, ਔਰ G ਕੀ ਹੈ? ਨॉन ਅਬੈਲੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ H ਵੀ ਯਾਨੀ S3 ਵੀ ਅਬੈਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ H ਅਬੈਲੀਅਨ ਆ ਤਾਂ S3 ਵੀ ਅਬੈਲੀਅਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਭ ਲਈ ਜਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਆ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ exactly one composition series ਹੈ। So if a cyclic group, any cyclic group have exactly mean equal, exactly one composition series, one composition series, then it is a P group. It is a P group, right? So this is again very important result. So it is a P group. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ G ਕੋਈ cyclic group ਦਿੱਤਾ ਮੰਨ ਲਓ solutions. So let G be a cyclic group. If it is a cyclic group, so it is generated by some generator, then G is generated by A, right? So it is a cyclic group generated by A, और असी order of A ले लेने हैं P1, P2 and Pn if it is Pm, where Pi are primes, not necessarily distinct, where primes not necessarily distinct. So we want to prove that these all will be same, then it will become a P group. Now by Sellow theorem we know that G has a unique subgroup of order. It implies G has a unique subgroup of order P1, P2 and P3. P1, P2 and we can say that Pi. So this is Pi for every I is running from 1 to so on up to m minus 1. So it has a subgroup of this kind. So that subgroup is of this values P1, P2 and so on up to Pi. It means order of G1 is equal to P1, order of G2 is P1 into P2, order of G3 is P1 into P3. So remember here we have a subgroup order of G1 which is equal to P1, order of G2 which has a order P1 into P2, order of G3 which is P1, P2 and P3. Continue the process, and similarly order of G m minus 1, this is up to P1, P2 and so on Pm minus 1, right? It has a subgroup of this kind. If it has a subgroup of this kind, so what is its composition series will be first identity, then group of order P1 which is G1, then G2, so on, here Gm minus 1 and then last which is Gm, so it is called as G. So whose order is P1, P2 and Pn. So this is a unique composition series because by the given it has exactly one composition series. So it is a unique composition series of G, right?
Now what is the order of factor group? We know that order of gi over gi minus 1, which is equal to pi, where I is running from 1, 2, so on up to m. So check that its order is p raised to power I. Now this order of gi by gi minus 1, so this is equal to p raised to power I, this value. Now G has unique composition series. If G has unique composition series and these are all these are prime number and prime number are simple, every group of prime number order is a simple, right? So this factor group are simple. Now this is a simple, so order of G determine a unique composition series. So unique composition series is possible if and only if and only if, remember that. So if and only if P1 equal to P2 equal to P3 equal to P, so here it is Pi, I think, here not power, Pm, this is all are equal. So I say that it is as P, so all are, because every permutation of prime factor of order G determine a, so what is the logic of this? Since every permutation of prime factor of order of G determine a unique composition series, then G has a unique composition series P if and only if P1 equal to P2 equal to Pm equal to P. So they are of this kind. So what is order of G? So substitute its value P into P into so on P. So this is P raised to power M. Then G is a P group. So G is a P group, right? So here what is the reason? I repeat again, since, so I write here every permutation. So what we used? Every permutation, every permutation of prime factor of order of G determine a unique composition series. So determine a unique composition series, ठीक है जी. So it implies it is possible if all the Pi are equal, right? Because unique mean all the Pi's are equal, so that is written as P. तो गल ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਗਰੁੱਪ ਆ ਗਏ this and this, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ P1, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ P2, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ P5, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ PM, ਸਪੋਜ਼. और दूजी कंपोजिशन सीरीज भी अगर है एग्जिस्ट कर रही, वो आ गई मान लो this एंड दिस. ਇਹਦਾ फैक्टर ग्रुप है PM, ਇਹਦਾ मान लो P4 आ, ਇਹਦਾ मान लो P2 आ, ਇਹਦਾ मान लो P1, ठीक है जी. दिस आ गया. ਹੁਣ यूनीक ਦਾ मतलब की हो गया कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ सेम हो जाएंगे, P1 ना इदा ही P2 ਇਹਦੇ ਨਾਲ. तो करते करते सारे PI's आपस ਦੇ ਵਿੱਚ बराबर हो जाएंगे. जे सारे PI's आपस 'ਚ बराबर हो गए
तो ਇੱਕੋ ਹੀ p ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ it is we get only because of unique composition series, right? So ਇਹ ਸਾਡੇ MSc फस्ट ਸਮੈਸਟਰ मॉडर्न अलजबरे ਦੇ लास्ट थ्योरम सी, जॉर्डन होल्डर थ्योरम्स। तो इस लास्ट थ्योरम ते कुछ क्वेश्चन तो बाद साडा जिहड़ा MSc फस्ट समैसटर मॉडर्न अलजबरे दा सिलेबस पूरी तरह ख़त्म हो चुका है और मेरी कोशिश ये रही है कि मैं ऑलमोस्ट हरेक क्वेश्चन नू जिहड़ा थ्योरम्स नू और हरेक क्वेश्चन नू सॉल्व करन दी कोशिश कीती है। ये टोटल नंबर ऑफ तुहाडे कोल जिहड़ी लैक्चर सीरीज़ है ये हुण तक 55 दे अराउंड हो गई है और इहदे विच असी हरेक थ्योरम जिहड़ी कि साडे सिलेबस दे विच आ और उहदे नाल रिलेटेड जिन्ने पॉसिबल क्वेश्चन हो सके आ उन्हां नू सॉल्व करन दी कोशिश कीती है और मैं आस रखदा कि तुसी इस लैक्चर सीरीज़ का मैक्सिमम बेनीफिट लवोगे और इन्हां दे नोट्स तैयार करोगे, इन्हां नू बार बार रिपीट करके जिहड़ा आ वो थ्योरम्स नू लिखोगे और उहदे नाल तुसी इहनू बैटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये साडे कोल इहदी एक चीज़ हो गई। दूजा मॉडर्न अलजबरा ਜਾਂ प्योर मैथमैटिक्स नू ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਮੀ ਗਰੁੱਪ, ਨਾਰਮਲ ਸਬ ਗਰੁੱਪ, ਕੈਲੇ ਥਿਊਰਮਸ, ਸੈਲੋ ਥਿਊਰਮਸ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਲੋ ਥਿਊਰਮ ਜਾਂ ਕੌਚੀ ਥਿਊਰਮ ਫॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕੌਚੀ ਥਿਊਰਮ ਫॉर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਵ ਜਾਰਡਨ ਹੋਲਡਰ ਥਿਊਰਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਅਲਜਬਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੇਨ किताब फॉलो की है वो है मॉडर्न अलजबरा बाय डॉक्टर सुरजीत सिंह। सो डॉक्टर सुरजीत सिंह की जिहड़ी किताब है, इस तो इलावा होर भी बुक्स हैं, IN हस्टिन और गैलस, वो थोड़ा जिहा हायर लैवल ते आ जाती हैं। सो अगर अपन बिल्कुल MSc लैवल की गल करिए तो साडे कोल जिहड़ियां बेस्ट बुक्स है वो है मॉडर्न अलजबरा बाय डॉक्टर सुरजीत सिंह। नंबर 2 एक अबस्ट्रैक्ट अलजबरा है खन्ना एंड भांबरी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਪਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮॉडर्न अलजबरा ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 55 ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਦੇਖੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਵਿਲ ਡੂ ਦਾ ਬੈਸਟ ਇਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ।